बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑन दी ग्रे लिस्ट ऑफ फैटफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है, इसकी ग्रे लिस्ट क्या है और पाकिस्तान क्यों इसकी ग्रे लिस्ट पे है, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं और इससे कैसे निकला जा सकता है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, करंट है और इसकी रिसेंटली अभी मीटिंग हुई है। और ये 2022 में भी ये क्वेश्चन जो है ये आ सकता है, क्योंकि ये अभी रिसेंट है और अभी चल रहा है। दो 2020 का ये क्वेश्चन है, वाई वाज पाकिस्तान प्लेस्ड ऑन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, व्हाट आर द implications and what measures should Pakistan take to move out of this list। 2020 में भी आया और 2022 में किसी और एंगल से एक्सपेक्टेड है कि इसी एंगल से या डिफरेंट एंगल से इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि शायद ये पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, इसमें कितनी ताकत है, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? It is the global money laundering and terrorist financial watchdog, global money laundering and terrorist financing watchdog. The intergovernmental body sets international standards that aim to prevent these illegal activities and the harm they cause to society. As a policy-making body, the FATF works to generate the necessary political will to bring about national, legislative, and regulatory reforms in these areas. बेसिकली इसके दो तीन मकासद हैं: मनी लॉन्ड्रिंग को कर्टेल करना, टेररिस्ट फिनांसिंग को देखना और वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन की जो प्रोलिफरेशन है उसको कर्टेल करना। The FATF has developed the FATF recommendations or FATF standards, which ensure a coordinated global response to prevent organized crime, corruption, and terrorism. They help authorities go after the money of criminals dealing in illegal drugs, human trafficking, and other crimes. The FATF also works to stop funding for weapons of mass destruction. The FATF reviews money laundering and terrorist financing techniques and continuously strengthens its standards to address new risks. The FATF monitors countries to ensure they implement the FATF standards fully and effectively and holds countries to account that don't comply. क्योंकि दुनिया में जो टेररिस्ट फिनांसिंग टेक्निक्स हैं वो भी तब्दील होती रहती हैं, कोई भी क्राइम है उसको करने के तरीके, मॉडस ऑपरेंडाई चेंज होते रहते हैं, और आजकल जो टेक्नोलॉजी का दौर है उसमें तो और ज़्यादा तेज़ी से तब्दीली आती है और इनको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल कॉम्पिटेंस चाहिए। फिर इसके अलावा जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो भी आज एक सिंगल क्लिक पे हो जाती है। स्पेशली मनी ट्रांसफ़र जो है, मनी ट्रांजैक्शन जो है, they are executed on single click. So it becomes very much relevant these days to counter the menace of money laundering. The FATF is leading global action by setting international standards for countries to regulate financial industries to help authorities to find, freeze, and confiscate the money of criminals. Now, coming to the brief history of the FATF, it was actually established in July 1989 by a group of seven, G7 जिसको बोलते हैं, by a group of seven summit in Paris, initially to examine and develop measures to combat money laundering.
In October 2001, the FATF expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing in addition to money laundering. 2001 में इसने अपने मैंडेट में इजाफा किया और टेररिस्ट फिनांसिंग को कम्बैट करने को भी अपने मैंडेट में डाला। पहले इसका सिर्फ एक ही मैंडेट था और वो था मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना। अप्रैल 2012 में इसने फिर एक और ऐड किया टास्क, वो था to counter the financing of proliferation of weapons of mass destruction. It was added in April 2012. So basically तीन मेजर एम्स हैं इसके, मैंडेट हैं। एक तो मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा टेररिस्ट फिनांसिंग और तीसरा फिनांसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन। इनको कंट्रोल करना, एफर्ट्स करना कि इनको बहुत हद तक कम किया जाए। ये हैं G7 कंट्रीज, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। अब इनिशियली द FATF हैड 16 मेंबर्स। G7 कंट्रीज, 7 कंट्रीज तो G7 के हो गए। यूरोपियन कमीशन, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड। Currently 37 countries and 2 regional organizations, the European Commission and the Gulf Cooperation Council, ये इसके members हैं। Indonesia enjoys the status of observer. A number of international organizations enjoy the observer status. There is focus on 4 areas of work: identifying the threats to the financial system, developing robust standards to fight these threats, assessing countries' compliance with FATF standards, assessing countries that fail to comply. In a globalized world where technology allows money to move quickly anywhere, fighting money laundering is more urgent than ever. Trillions of dollars are laundered every year. Almost 2 to 5% of global GDP would probably be a consensus range. यानी दुनिया के जो पूरा जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी का 2 से 5% तक, यानी जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स बनते हैं, वो हर साल जो है वो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग होती है। दैट मनी फ्यूल सीरियस क्राइम, क्योंकि ये अनअकाउंटेड मनी है, तो ये ड्रग डील, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस्तेमाल होती है। The FATF is a technical body led by a president who is the principal spokesperson and rep of this FATF. The FATF president, a high-ranking government official from one of the FATF member countries, convenes and chair the meetings of the plenary. Plenary वो मीटिंग है जिसमें तमाम जो मेंबर्स हैं वो शरीक होते हैं। Dr. Marcus Player of Germany assumed the position of president of the FATF on July 1, 2020. He succeeded Liu of the People's Republic of China. So what if FATF plenary, decision-making body of the FATF, और ये it is the decision-making body of the FATF और इसमें तमाम stakeholders, तमाम members शामिल होते हैं, and it meets twice a year. What is the FATF secretariat? It is in Paris, and it supports the work of the FATF. The FATF secretariat is a multicultural team of dedicated and highly motivated professional staff. The secretariat staff represents diverse experience and vast experience in law enforcement, financial intelligence, legal professions, and policy development. When the FATF issued its first recommendations in 1990, they were a milestone and turning point in countries' fight against money laundering. Countries are working together to find a solution to the problem of crime or drug
related money. As a result of the FATF recommendations, countries have implemented the necessary laws and regulations to fight money laundering and subsequently the financing of terrorism and proliferation. तो FATF रिकमेंडेशन जिससे हमने पहले बात की, दे आर दी FATF स्टैंडर्ड्स जिनको कंप्लाई करना पड़ता है और दे आर बाइंडिंग. The UN Security Council recognized the FATF essential role in setting global standards to combat money laundering, terrorist financing, and the financing of proliferation of weapons of mass destruction when it adopted a new resolution, UNSCR 2462, urging all countries to implement the FATF recommendations, including the standards to assess the specific terrorist financing risks they face. For the first time, the UN Security Council embedded an existing FATF standard in international law by requiring the criminalization of terrorist financing, irrespective of a link to a specific terrorist act. UNSC यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ने भी FATF के रोल को रिकॉग्नाइज किया और इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको अपने इंटरनेशनल लॉ का जो कि कोडिफाइड नहीं है उसका हिस्सा बना दिया. Now coming to the grey list. What is the grey list? Jurisdictions under increased monitoring or grey list. These are the jurisdictions under increased monitoring who are actively working with the FATF to address strategic deficiencies in their regimes to counter money laundering, terrorist financing, and proliferation financing. Basically, there are अभी तक जो 20-22 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, यानी दे आर कॉल्ड jurisdictions under increased monitoring, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है. When the FATF places a jurisdiction under increased When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means the country has committed to resolve swiftly the identified strategic deficiencies within agreed timeframes and is subject to increased monitoring. The list is often referred to as the grey list. It serves as a warning that the country may enter the blacklist. तो ये एक लिस्ट है जिसमें आप कह सकते हैं कि इन द मिडवे अराउंड 20 to 22 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको इस लिस्ट में रखा गया है. पाकिस्तान भी उनमें शामिल है और इस लिस्ट में होने का मतलब ये है कि आप एक कंटिन्यूस रिस्क में होते हैं कि आप ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं. ब्लैक लिस्ट में जो कंट्रीज हैं उनमें ईरान है, उसके ऊपर हम बात करते हैं. तो ये इट्स वेरी डेंजरस टू बी इन दिस लिस्ट और इसकी बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन भी हैं. What is the blacklist are non-cooperative countries or terrorist or non-cooperative countries or territories. These countries are assessed as supporting terror financing, terror funding, and money laundering activities. As of 2020, only 2 countries are on the blacklist: North Korea and Iran. यानी ये वो कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में या FATF के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो एस्टेब्लिश्ड है कि ये टेरर फंडिंग को सपोर्ट करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करते हैं. तो इस लिस्ट में होना, इट्स हॉरिबल टू बी इन दैट लिस्ट फॉर योर ग्लोबल इमेज. Pakistan is on the grey list. The Paris-based Financial Action Task Force had placed Pakistan on the grey list in June 2018. It asked Islamabad to implement a 27-point plan of action to curb money laundering and terror financing.
by the end of 2019, but the deadline was extended later on due to the coronavirus pandemic. ये डेडलाइन जो है ये बढ़ती बढ़ती फिर अभी जो है ये फैटफ की जो अभी रिसेंट मीटिंग थी जून 2021 में, यहाँ तक इसकी लास्ट मीटिंग हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। ये डेडलाइन एक्सटेंड होती जाती है टिल नेक्स्ट प्लेनरी मीटिंग तक, और अभी भी एक्सटेंड हुई है। अच्छा, अक्टूबर 2020 में एक प्लेनरी इनकी मीटिंग हेल्ड हुई, जिसमें फैटफ ने कंक्लूड किया कि पाकिस्तान ने 21 पॉइंट जो है वो मुकम्मल कर ली हैं। रिमेनिंग 6 पॉइंट्स पे फरवरी 2021 तक उनको कंप्लाई करे। जो पॉइंट्स रहते थे उनमें फेलियर टू टेक एक्शन अगेंस्ट 2 ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जैश ए मोहम्मद चीफ मौलाना मसूद अजहर एंड जमात उद दावा हेड हाफिज सईद। ये थे इनके खिलाफ एक्शन, भी इनमें एक पॉइंट था कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो फरवरी 2021 तक डेडलाइन थी कि आपने रिमेनिंग 6 पॉइंट्स को फुलफिल करना है। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिन पे पाकिस्तान, ये वो पॉइंट्स हैं जिनको टास्क था कि पाकिस्तान फुलफिल करे। उस टाइम जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं टेरर ग्रुप्स के साथ विच हैव बीन बैंड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको खिलाफ एक्शन पाकिस्तान ने नहीं लिया, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। डिले इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ बैंड इंडिविजुअल एंड एंटिटीज जैसे मोहम्मद एंड इट्स चीफ मौलाना मसूद अजहर एंड जमात दावा एंड इट्स हेड हाफिज सईद, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और प्रोसिक्यूशन की जाए, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन। Non-compliance in cracking down on terror financing through narcotics and smuggling of mining products including precious stones। इनकी नॉन कंप्लायंस की एक पॉइंट था कि ये भी एक पॉइंट है जो अभी रहता है, इसको फुलफिल करना। The FATF showed concern about the 4,000 names that were on Schedule 4 list under the Anti-Terrorism Act up to January but went missing in September 2020। 4,000 वो बंदे जो फोर्थ शेड्यूल पे थे, शेड्यूल 4 पे, जो कि मिस हो गए, उनके ऊपर भी फैटफ ने अपने कंसर्न शो किए। फिर इनकी मीटिंग होती है 2021 में, जिसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान वुड बी केप्ट ऑन इट्स ग्रे लिस्ट एंड पाकिस्तान वुड कंटिन्यू टू बी ऑन दिस लिस्ट। और इसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 24 पॉइंट्स पे अपनी कंप्लायंस दे दी है, सिर्फ 3 पॉइंट्स रहते हैं अभी। उनके प्रेसिडेंट ने कहा था पाकिस्तान must improve their investigations and prosecution of all groups and entities financing terrorists and their associates and show that penalties by courts are effective. As soon as Pakistan shows it has completed it has completed these items, FATF will verify and members of FATF will vote. तो अब फरवरी 2021 तक 3 पॉइंट्स हमारे रहते थे जिन पे हमने कंप्लाई करना था। ये है फैटफ की फाइंडिंग्स जो उस टाइम दी थी फैटफ ने। इसमें उन्होंने कहा था इनका एक रीजनल पार्टनर है एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। पाकिस्तान मेड ए हाई लेवल कमिटमेंट with the FATF and the Asia Pacific Group on money laundering to strengthen its anti-money laundering, countering the financing terrorism regime, and to address its strategic counter-terrorist financing related deficiencies।
ये उनकी वो फाइंडिंग थी जो उन्होंने पब्लिश की थी। ये वो 3 पॉइंट्स थे जो रहते थे जो फरवरी 2021 की मीटिंग में, इनके ऊपर पाकिस्तान को कहा गया कि मजीद कार्रवाई करें। Demonstrating that terror financing investigations and prosecutions target persons and entities acting on behalf or at the direction of the designated terrorist persons or entities. Demonstrating that terrorist financing prosecution result in effective, proportionate, and disassociative sanctions. Demonstrating effective implementation of targeted financial sanctions against all terrorist and entities as declared by the United Nations Security Council Resolution 1267 and 1373. The FATF takes note of the significant progress made on the entire action plan. ये वही फाइंडिंग है जो उन्होंने फरवरी 2021 में दी थी। ये 24 पॉइंट आपने मीट कर लिए हैं और जून 2021 तक का टाइम दिया गया था। ये है जून 2021 की जो प्लेनरी सेशन है, और इसमें डिसाइड किया गया है कि पाकिस्तान वुड बी केप्ट ऑन द ग्रे लिस्ट एज यूजुअल। पाकिस्तान वुड कंटिन्यू टू बी ऑन दिस लिस्ट। इसने कहा कि पाकिस्तान हैड फेल्ड टू टेक appropriate action against the UN designated terrorist such as 2611 accused। ये जो नवंबर 26 2008 में इंडिया में ब्लास्ट हुए थे, उनके अक्यूज हाफिज सईद एंड जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, ये फैटफ ने कहा। Although the global anti-money laundering and terror financing body has acknowledged some progress made by Pakistan, it said the country should continue to work to address its strategically important deficiencies. The FATF President Marcus Player said the decision was taken at the conclusion of the virtual plenary of the Paris-based organizations. Pakistan would continue to remain on increased monitoring list. He further said that Pakistan has now completed 26 out of the 27 action items given to it in 2018. The FATF has asked Pakistan to take action against UN designated terrorists. एक पॉइंट अब रहता है पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि FATF imposed a new list of 6 action items identified by its regional partner, the Asia Pacific Group, and Pakistan. For Pakistan to be delisted, it will have to largely address all items on the new action plan in addition to the only remaining item on the original plan. ये उनकी स्टेटमेंट जो अवेलेबल है on the FATF website, which says that in response to additional deficiencies later identified in Pakistan's 2019 Asia Pacific Group Mutual Evaluation Report, Pakistan has made progress to address a number of the recommendations in the MER and provided further high-level commitment in June 2021 to address these strategic deficiencies pursuant to a new action plan that primarily focuses on combating money laundering. These are the 6 items which have been given by APG. अब पाकिस्तान को क्या करना है कि वो जो एक पॉइंट रहता है ओरिजिनल प्लान का वो भी मीट करना है, और ये 6 पॉइंट्स भी उसने पाकिस्तान को मीट करना होंगे। ये 6 पॉइंट्स क्या हैं देखते हैं। Pakistan should continue to work to address its strategically important anti-money laundering and countering the financing of terrorism deficiencies, namely by enhancing international cooperation by amending the Mutual Legal Assistance Law,
demonstrating that assistance is being sought from foreign countries in implementing UNSCR 1373 designation। ये वही हैं जो मसूद अजहर और हाफिज सईद के बारे में है। Demonstrating that supervisors are conducting both on-site and off-site supervision commensurate with specific risks associated with designated non-financial businesses and professions, including applying appropriate sanctions where necessary, demonstrating that a proportionate and dissuasive, dissuasive sanctions are applied consistently to all legal persons and legal arrangements for non-compliance with beneficial ownership requirements, demonstrating an increase in money laundering investigations and prosecutions, and that proceeds of crime continues to be restrained and confiscated in line with Pakistan's risk profile, including working with foreign counterparts to trace, freeze, and confiscate assets, demonstrating that designated non-financial businesses and professions are being monitored for compliance with proliferation financing requirements and that sanctions are being imposed for non-compliance। ये 6 पॉइंट्स हैं, अगर आपको याद ना भी रहे तो इनमें से कोई 2 पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं कि इंक्लूडिंग दीज पॉइंट्स, ये जो एजेंडा आइटम पे हैं। और ये 6 पॉइंट्स का एक प्लान है और एक वो जो पॉइंट रहता है, ये 7 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान ने कंप्लाई करना है। तो क्या कमेंट्स है पाकिस्तान के जर्नलिस्ट और एनालिस्ट ने क्या कमेंट किया इस पे? पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने कहा कि ये डिसीजन जो है, चूंकि पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट डिस्पाइट दैट इट हैड largely complied 26 points out of 27, it is questionable. Some said that it is a tool of geopolitical pressure which is being used against Pakistan। और अब ये वो एंगल है जिसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि क्या वाकई ऐसा है कि क्या थ्रेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट में यूज हो रही है इंटरनेशनली पाकिस्तान को प्रेशर करने के लिए। इसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, पाकिस्तान की कौन मुखालफत कर रहा है? अपोजिशन फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी। Some European countries, including France and Germany, had recommended to the FATF to continue to keep Pakistan on the grey list and had taken the position that not all points had been fully implemented by Islamabad। France has not been happy with the recent response of Islamabad on the cartoon issue। तो रिसेंटली जो पाकिस्तान में मुजाहरे भी हुए अगेंस्ट फ्रेंच एम्बेसडर, और ये 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से फ्रांस और जर्मनी की तरफ से अपोजिशन है पाकिस्तान को फैटफ से निकालने की राह में रुकावट है। यूएस के भी कंसर्न है। रिसेंटली पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैज flatly refused to the US to give them military bases for launching attacks against the Taliban using the soil of Pakistan। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके ऊपर भी यूएस के कंसर्न है। फिर यूएस के कंसर्न जो है, they have concern over the acquittal of accused American journalist Daniel Pearl's kidnapping and murder case। Pakistan Supreme Court had ordered release of British-born Al-Qaeda terrorist Ahmad Umar Saeed Sheikh and his 3 IDs in the 2002 Pearl murder case, a judgment announced by the American journalist family as a complete travesty of justice। इंडिया का फैक्टर भी है। इंडिया is a voting member of FATF। India is pushing for Pakistan to be blacklisted on the pretext of the following allegations कि पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट के लिए सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, and Pakistan has not taken any action against several terrorist individuals and entities, including those prescribed by the UN Security Council, such as
मसूद अजहर एंड दाऊद इब्राहिम। ये इंडिया की रेवलरी भी है टुवर्ड्स पाकिस्तान। तो इंडिया डजंट वांट कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। So what would be the repercussions for Pakistan? With Pakistan's continuation in the grey list, it is increasingly becoming difficult for Islamabad to get financial aid from the International Monetary Fund, World Bank, Asian Development Bank, and the European Union. It will further enhance problems for the debt-ridden nation, which is in a precarious financial situation. This places Pakistan's banking channels and economy in a serious problem since they are linked to the international financial system. Imports and remittances may be adversely affected, along with potential damage to the credibility of transactions with Pakistan by foreign institutions. Potential foreign investors may also be affected. The stock prices adversely affected at the Pakistan Stock Exchange. ये repercussions हैं और ये भी है foreign financial institutions may carry out enhanced checking of transactions with Pakistan to avoid risk of violations pertaining to money laundering and financing of terrorism. So what is the hope for Pakistan? Pakistan has support of the following countries which are member of the FATF, and a hope for Pakistan that it will not be placed in the blacklist. चाइना है, मलेशिया है और तुर्की है, और तीन ही वोट पाकिस्तान को चाहिए हैं कि उसको ब्लैकलिस्ट ना किया जाए। Now coming to the point, how to get out of the grey list. It is all about diplomacy. Pakistan should have to be engaged in better diplomacy. Some analysts say Pakistan's placement on the grey list as move of the US to have pressure on Pakistan, क्योंकि अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने डिनाई किया है यूएस को मिलिट्री बेसिस देने से भी, और यूएस का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया पैटर्न में, और इसी को वो यूज़ करेगा। लिहाजा पाकिस्तान के लिए चांसेस अभी काफ़ी मुश्किलात हैं जो सिनेरियो बन रहा है उसमें। लेकिन पाकिस्तान को बेटर डिप्लोमेसी टेक्निक्स अडॉप्ट करना होंगी, और इसमें जो न्यूट्रल मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको भी पाकिस्तान को एंगेज करना पड़ेगा उनके वोट के लिए, उनकी सपोर्ट लेने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पाकिस्तान वुड हैव टू कंप्लाई विद द आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स, जो कि ओरिजिनल प्लान का एक पॉइंट है और जो 6 पॉइंट्स जो हैं वो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने दिए हैं। तो ये है वो तरीका जिसकी वजह से पाकिस्तान जिसको अडॉप्ट करके बाहर आ सकता है। तो ये था फैटफ के बारे में, और इसकी जब भी प्लेनरी मीटिंग हो उसमें जो भी डेवलपमेंट है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन फैटफ के बारे में तमाम जो मालूमात आपको पता होनी चाहिए वो सारी की सारी इस लेक्चर में मौजूद हैं, और थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, बोरिंग टॉपिक भी आप कह सकते हैं, बट इट इज़ वेरी मच recent and very much important. Take care. Allah Hafiz.